Good afternoon to all who have joined this event. I am Nishant Sharma, Associate Professor, School of Pharmacy, Abhilashi University. So today I am presenting the topic that is nanoemulsion. So we will start the topic that is nanoemulsions, the innovative nanoemulsion. So first we will see the table of contents that we will discuss about the introduction of nanoemulsion types, preparation techniques of nanoemulsions, next the structure and properties of nanoemulsion, then characterization or evaluation, and finally the application of that nanoemulsion. So first one is your introduction to the nanoemulsion. Nanoemulsion are the ultra fine dispersion, creating stable mixes of oil and water. So first of all, I will discuss about the dispersion. That what is dispersion? And you can see the figure that is uh, globules in a continuous phase. That dispersed phase dispersed in continuous phase. Many students have studied about that what is dispersion, that one phase is dispersed in the continuous phase. So what is the need and why there are two phases, that one is dispersed phase and second one is your continuous phase? It means we have a formulation which is having two phases. And why there are two phases? Because the two phases are immiscible with each other. So that is the exact meaning of the dispersion, that one uh, phase is dispersed in another phase, whether it is solid in liquid, liquid in liquid, liquid in gas, or liquid in liquid. जैसे एग्जांपल आपका oil and water. You all know that oil is not miscible in water. दोनों क्या है, आपस में मिक्स नहीं हो सकते. So we have to disperse one phase, that is oil, in water. We have to disperse one phase into another phase. Now there is two phases, that is dispersed phase and continuous phase. So continuous phase here means that one phase that is of more amount, larger amount. जैसे आप ऑयल को वाटर में डिस्पर्स कर रहे हैं, तो अगर वाटर का जो कंटेंट है वो ज्यादा है, उसको हम इंक्लूड करेंगे कंटिन्यूस फेज में. और ऑयल को अगर हम उसमें मिक्स कर रहे हैं, तो वहां पे मिक्स की बजाय जो है उसको हमें डिस्पर्स करवाना पड़ेगा. तो जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि देर आर सम ग्लोब्यूल्स इन द ब्लैक कलर, और जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है व्हाइट में, उसमें जो है दैट इज कंटिन्यूस फेज. सो दी dispersed phase is spread. It is spreaded all over the uh, white background. That white background is our continuous phase. This is an example. You know that dispersion is classified as the according to the states of matter, whether it is solid mixed in dispersed in liquid, or liquid dispersed in liquid. So this is the definition of dispersion. And in that dispersion, we have that emulsion. That's our topic. Emulsion. Emulsion means that the dispersed phase and the continuous phase both are in the state of uh, liquid phase. So both the liquids that are immiscible
they are mixed with each other. So we have to disperse that one phase into another phase, that is emulsion in the case of both liquids. So emulsion is a coarse dispersion. Now we will discuss the nanoemulsion. Nanoemulsion are ultra fine dispersion. So dispersion is also classified according to the size of the globules or particles. So there are one is your true solution, or we can call it as molecular dispersion. Second one is your colloidal dispersion, and third one is your coarse dispersion. And nano size, it is also very small. So we have concluded it as ultra fine dispersion, that is creating stable mix. It is a stable mix. So now in this dispersion, if we have dispersed one phase into another phase, suppose oil is mixed in water or we have dispersed it, it is spreaded all over the solvent phase, but it should remain in that phase. It should remain in that consistency, that globules are uh, fully spreaded all over the solvent. So we have to add some additives, or we can call it as excipient, and it is known as emulsifying agent or emulsifier, which will act as a barrier between both the phases, that they will not flocculate or कोलिसेंस, दे विल प्रिवेंट फ्रॉम द कोलिसेंस. आसान भाषा में, जो ये जो ग्लोब्यूल्स हैं, ऑयल के जो ग्लोब्यूल्स हैं हमने वाटर में डिस्पर्स करवाए हैं, ये आपस में इकट्ठे जुड़ने नहीं चाहिए. उसको रोकने के लिए हम जो है इमल्सिफायर का यूज करते हैं. वो इमल्सिफायर में एग्जांपल आपका जैसे सरफेक्टेंट है, सरफेस एक्टिव एजेंट, दोनों फेजेस की जो सरफेस टेंशन है या इंटरफेशियल टेंशन है, उसको ये खत्म करता है. तो इट विल एक्ट एज अ बैरियर. उस बैरियर से क्या होगा, जो ये हमारे ग्लोब्यूल्स हैं वो आपस में इकट्ठे एक्यूमुलेट नहीं होंगे, और जो हमारी फेजेस हैं आपस में डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहेंगी. अगर वहां पे हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट अगर एब्सेंट होता है, या उस जो बैरियर है उसने मेंटेन किया, अगर वो बैरियर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे जो है ग्लोब्यूल्स आपस में इकट्ठे जुड़ जाएंगे, और ऑयल विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर फेज. So this is the elaboration of the dispersion and emulsion, both liquids in the emulsion, and these are in nano size. So that nanoemulsions will improve the solubility and stability, adsorption, and benefiting not only to the pharmaceuticals but also in the field of cosmetics and food industries, by revolutionizing product formulation and applications. So these nanoscale emulsions have droplet size less than 100 nanometer. तो नैनोमीटर की रेंज में इसका जो साइज रहेगा, एंड इट विल बूस्ट द प्रोडक्ट एफिशिएंसी, effectiveness for the targeted drug delivery, and also enhanced skin penetration and improved taste and texture. तो जो नैनो साइज में इसका जैसे साइज है, वो जितना छोटा रहेगा, तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी मींस हमने कहीं किसी साइट स्पेसिफिक साइट पे अगर हमने टारगेट करना है ड्रग डिलीवरी को, तो वो हम इजिली कर सकते हैं. वो इसका एक बेनिफिट है. एंड जितना कम इसका साइज रहेगा, पार्टिकल साइज रहेगा, तो स्किन पेनिट्रेशन भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी. और उसका अगर फूड इंडस्ट्री में है, तो इट विल इम्प्रूव द टेस्ट एंड ऑल्सो द टेक्सचर. जितना फाइन हमारे पास फॉर्मुलेशन रहेगी, उतना टेक्सचर उसका क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा. एंड नैनो इमल्शन एंश्योर द better bioavailability, shelf life extension, and elevating the standard in various fields such as drug delivery and food technology. अब यहाँ पे it will ensure the better bioavailability. अब bioavailability means bio. Let me split this word, that is bioavailability. Bioavailable means the drug that is
available in the body. In the exact definition of bioavailability is that if we are taking any medicine, let us suppose we are administering one tablet. So the tablet contains 500 mg of drug. Let us suppose 500 mg of drug, that is API, active pharmaceutical ingredient, example paracetamol. So by administering orally from the that tablet, all the 500 mg drug will not reach to our blood circulation. That is systemic circulation. That will never reach to our blood circulation. So how much amount that is unchanged before metabolism? मान लीजिए हमारे पास 50% जो है जो ड्रग है 500 से जो है 500 mg से 50% ड्रग जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रही है, तो जितना अमाउंट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रहा है वही हमारा जो है बायो अवेलेबिलिटी है। तो उसी बायो अवेलेबिलिटी को एनहांस करने के लिए जो है नैनो इमल्शन एक बेटर रोल प्ले कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ इसकी एक्सटेंड होगी। So due to this smaller particle size, it will enhance the bioavailability. So due to the smaller size, definitely the nano scale droplets or nanoemulsion uh, is are stable dispersion. जितना smaller उसका size रहेगा उतना जो है उसका stable हमारा emulsion बनेगा. So that is stable dispersion and nano scale droplets in another immiscible liquid. जैसे मैंने आपको बताया कि जो emulsion है वो emulsion is that both liquids are immiscible with each other. और उसकी एप्लीकेशन जो है फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में रहेगी. So these emulsions offer enhanced bioavailability, stability and optical transparency. जो सिंपल इमल्शन है, इमल्शन की जो कंसिस्टेंसी रहती है, उसकी जो अपीयरेंस रहेगी, दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, जो नॉर्मल इमल्शन है. बट इफ we are using or differentiating that nano size emulsion with the simple or conventional emulsion, तो उसके comparatively जो है हमारा nano emulsion, it will be transparent. You can see across the that particular type of emulsion. So there are three main types of nano emulsion, that is oil in water, water in oil, and multiple emulsion. So here we have discussed that dispersed phase and continuous phase. So here it is mentioned that oil in water. So here oil is in smaller quantity and water is in larger quantity. So that's why we are saying that oil in water. So here dispersed phase is the oil phase and water is the continuous phase, or we can call it as dispersion medium. एंड मल्टीपल इमल्शन, इसमें हमारे पास दोनों फेजेस रहती हैं, ऑयल इन वाटर इन ऑयल. तो ये जो है मल्टीपल इमल्शन. सो दीज आर हैविंग ईच विद यूनिक स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन. तो नेचुरल सी बात है, अगर हमारा फेजेस अगर उसमें चेंज रहेंगे तो उसका स्ट्रक्चर भी यूनिक रहेगा और उसकी एप्लीकेशंस में भी हमारे पास चेंज आएंगे. सो and the nanoemulsions are produced using high energy methods like high pressure homogenization to achieve the smaller droplet size. So now we will discuss about the advantages of that nanoemulsion. So it will eliminate the fluctuation in absorption. अब absorption जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम कोई टेबलेट है या कोई भी अलग हमारी डोजेस फॉर्म है उसको हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वेदर किसी भी हम रूट से हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वहां से जो बायो अवेलेबिलिटी हमने पढ़ी थी कि कितना परसेंट जो है अमाउंट जो है ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रहा है. तो जब भी कोई भी मेडिकेशन
हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं या पेशेंट को एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, तो उसके बहुत सारे चेंजेस उसमें आते हैं, या उसमें दो चीजें हमारे पास रहती है, एक फार्माकोकाइनेटिक्स एंड सेकंड वन इज योर फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि दैट इज what the body does to the drug, और pharmacodynamics that what the drug does to the body। अब pharmacodynamics अलग पार्ट है कि जो दवाई हम खा रहे हैं, मान लो पैरासिटामोल खा रहे हैं या कोई और दवाई खा रहे हैं, तो वो बॉडी में जाके क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज इंक्लूडेड इन फार्माकोडायनेमिक्स। लेकिन वो इफेक्ट शो करने से पहले उसको फार्माकोकाइनेटिक्स में जाना पड़ेगा, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मान लीजिए हम कोई टेबलेट खा रहे हैं, तो टेबलेट इज नॉट अ ड्रग, इट इज अ मेडिसिन। तो टेबलेट से जो पैरासिटामोल है उसको ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच के अपने साइट ऑफ एक्शन में जाके अपना एक्शन शो करना है। तो उसके लिए उसका सबसे पहले जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, इट इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्ब जो ड्रग है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए पहले जो टेबलेट है उसको ब्रेक होना पड़ेगा, डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जो टेबलेट की अगर इवेल्युएशन करते हैं तो उसमें सबसे पहला हम इवेल्युएट करते हैं, दैट इज डिसइंटीग्रेशन। तो टेबलेट विल डिसइंटीग्रेट फर्स्ट, देन इट विल रिलीज द पर्टिकुलर ड्रग। मान लीजिए पैरासिटामोल है, तो वो उसको पहले उस टेबलेट से जो है रिलीज होना पड़ेगा। उस रिलीज के होने के बाद उसको जो है जो हमारा बॉडी का फ्लूइड है, स्टमक में जो भी सॉल्यूशन है, उसमें उसको डिसोल्यूशन उसकी होनी है पहले। आफ्टर डिसॉल्विंग इट विल गो इनटू द सॉल्यूशन फॉर्म। आफ्टर going into the solution form, it will absorb through the intestine or stomach, it will reach the systemic circulation. So that permeation, through permeation, the drug is reaching to the blood circulation, that is included in the absorption. So it will boost the rate of absorption due to smaller size. तो उसी स्मॉलर साइज की वजह से जो है उसकी सॉल्युबिलिटी एनहांस हो रही है, उसकी एब्जॉर्प्शन एनहांस हो रही है, परमिएशन एनहांस हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी एनहांस होगी कि ज्यादा अमाउंट में हमारी ड्रग जो है ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगी, वो अपना इफेक्ट जो है इजीली शो करेगी। सो नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस कर ही चुके हैं कि इट विल एनकरेज दी solubilization of lipophilic medication. Lipophilic means that is having fat soluble properties. Lipophilic, lipid soluble or fat soluble medications. These lipophilic medications are less soluble in water or aqueous phase and more soluble in, that is your oily phase. So next is your provide the water insoluble pharmaceutical doses form in aqueous form. तो ये जो है वाटर insoluble pharmaceutical doses form को भी aqueous form में provide करवा सकते हैं। तो it will promote the better bioavailability. So there are several methods of administering the medication. ये भी एक इसका एडवांटेज है कि हम जो है इसको बहुत सारे रूट से जो है एडमिनिस्टर करवा सकते हैं, जैसे टॉपिकल, ओरल, इंट्रावेनस। टॉपिकली मींस ऑन दी सरफेस और सरफेस वेदर इट इज स्किन। तो जो भी सरफेस के थ्रू हम जो है ड्रग को एडमिनिस्टर करवाते हैं, दैट इज आवर टॉपिकल रूट। orally through the oral cavity or through the mouth we are administering the drug through the enteric system, that includes in oral, and intravenous, that is through the directly to the veins, that we can inject the drug. So we can use or administer this type of medication through different routes. So this is a benefit. So using nanoemulsion as a delivery system will definitely increase the effectiveness, allowing the overall dose to be decreased and minimizing the unwanted effects. तो इससे जो है ओवरऑल जो डोज है, अब मान लीजिए हमारी कोई भी दवाई हम खा रहे हैं, वो जो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। मान लीजिए हम 500 mg की कोई दवाई खा रहे हैं, तो 500 mg ही पहुंच रही है,
ब्लड सर्कुलेशन, लेकिन उसकी जरूरत तो हमें है नहीं। तो अगर जो ड्रग है इजीली बायो अवेलेबल है, इट मींस हमारी जो ओवरऑल डोज है वो भी डिक्रीज होगी। अब इसका एक एग्जांपल है, जैसे मान लो आप इंजेक्शन लगाते हैं और एक तरफ आप दवाई जो है ओरली खा रहे हैं, तो उसमें डोज में डिफरेंस क्यों है? मान लो इंजेक्शन हमारा 25 mg का है या मान लो 50 mg का है, और वही हमारा जो ओरली अगर हम मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसमें 250 mg है, 350 mg है, 500 mg है। तो वो डिफरेंस इसी की वजह से है कि बायो अवेलेबिलिटी कितनी है। तो अगर बायो अवेलेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है तो उससे हमारी जो ओवरऑल डोज है वो भी डिक्रीज हो रही है, तो उसमें हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। एक्सपेंसेस कम होंगे तो उसका जो प्राइस है वो भी कम होगा। एंड अगर डोज कम है तो उससे जो एडवर्स इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट हैं, अनवांटेड इफेक्ट्स हैं, वो जो है मिनिमाइज हो जाएंगे, दे विल बी लेसर। So components of nanoemulsion, the primary constituent of nanoemulsion consists of, as we have discussed, that is oil phase, aqueous phase, and the emulsifiers are surfactants or co-surfactant. तो surfactant मैंने आपको बताया, these are surface active agents जो कि सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं। तो सर्फेक्टेंट की क्वालिटी कह रहे थे कि दे आर हैविंग बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक हमारा जो एक्वस फेज है और लिपोफिलिक जो हमारा ऑयल फेज है। तो ये दोनों फेजेस को जो है आपस में ना ही मिलने देंगे, ना ही ये जो है सेपरेट होने देंगे। सो दे विल रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेजेस। And a crude temporary emulsion resulting from an oil and water mixture will separate into two distinct phases upon standing due to consolidation of dispersed globules. So emulsifiers or emulsifying agents can provide stability to these systems. And nanoemulsions are predicated on low interfacial tension as opposed to coarse emulsion micronized by external energy. When co-surfactants are added, a thermodynamically stable nanoemulsion form spontaneously. जो आपका thermodynamical stable nanoemulsion. Thermodynamically means which is having no chemical reaction, or we can say that it is the system is in equilibrium with the chemical environment, or its chemical environment is in equilibrium. So since the droplet size in the dispersed phase is usually less than 140 nanometers, so liquids with nanoemulsions are transparent. So as the size decreases, the formulation will become transparent. That is oil phase. So the functioning and physiochemical characteristics of nanoemulsions are greatly influenced by the choice of oil phase. So based on their solubility, stability, and suitability for the desired application, many types of oils such as synthetic oils like medium chain triglycerides, natural oils like olive oil, soybean oil, and essential oil like peppermint and tea tree oil can be used. अब यहाँ पे जो है essential oils, अब essential जो word है that is required, but यहाँ पे जो essential oils means that is having some essence, that the word exact the meaning of that essential oil means the oil which is having some essence, और इसका जो दूसरा नाम है that is volatile oil, it is volatile in nature. जैसे आपका पेपरमिंट ऑयल है, सबने देखा है पेपरमिंट ऑयल जो है volatile in nature है। मान लो हमने ओपन कंटेनर में पेपरमिंट ऑयल रखा है तो it will evaporate at the room temperature. So that's why the uh, essential oils or volatile oil we can say it as. So next is your aqueous phase. So in nanoemulsion, aqueous phase functions as the continuous phase and affects the rheology. Rheology means that the flow properties and stability and biocompatibility of the mixture. It could consist of electrolytes,
water or other substances mixed with aqueous solution. तो aqueous solution मीन्स ऐसा नहीं है कि उसमें वाटर ही है, तो उसमें जो है aqueous phase में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं, and that will be mixed with the water. So the stability and performance of nanoemulsion can be greatly impacted by the makeup. जो मेकअप हम वॉल्यूम करते हैं, मान लीजिए हमने जो है सॉल्यूशन जो है 100 ml बनाना है, तो 100 ml जो है हमारा जो एक्वस फेज है उसको मेकअप करने के लिए हम जो है उसमें ऐड करते हैं, एंड द पीएच ऑफ द एक्वस फेज. सो पीएच इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. मान लीजिए हम जो है टॉपिकली या किसी भी रूट से हम कोई ड्रग दे रहे हैं, तो उसका जो पीएच है वो ऑप्टिमम लेवल का होना चाहिए. इट शुड नॉट इरिटेट आवर स्किन. सो दीज आर सम पैरामीटर्स. Surfactants and co-surfactants, as we have discussed earlier, that are essential for stabilizing the nanoemulsion because they lessen the tension that exists between the water and oil phase. Uh, these co-surfactants increase the effectiveness of surfactants and aid in creation of small droplet sizes, whereas surfactants will adsorb at the oil-water interface and provide a protective coating around the scattered droplets. तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो सरफेक्टेंट है वो सरफेस टेंशन जो है उसको रिलीव करता है, और जो होल्ड रखता है इनको आपस में जुड़ने नहीं देता है. तो इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं हमारे सरफेक्टेंट्स के, दैट इज ट्विन स्पैन, सोडियम डोडिकाइल सल्फेट एंड ज़ुट्राइनिक surfactants. Zutrinic means that is having both the factors, that is ionic, non-ionic. So these we have discussed as components of nanoemulsion. Next, the types of nanoemulsion: uh, oil in water, water in oil nanoemulsion, and multiple emulsion. So we have discussed it earlier that oil in water means oil is dispersed in the water phase. So this is water is in continuous phase and oil is in dispersed phase. Next one is our water in oil, that oil is in continuous phase and water is in that is dispersed phase. And next is the multiple emulsion. We have already discussed about the types. Now next, the preparation techniques of nanoemulsion. So these formulation techniques, the methods for the preparation, that is high pressure homogenization, persuasion method, phase inversion technique, brute force method, ultrasonic emulsification, microfluidization, spontaneous emulsification, solvent evaporation technique, or hydrogel method. So these are some methods to prepare the nanoemulsion. Homogenization or जो ultrasonic, due to that with the help of ultrasonic radiations we can split or break the particles into nano size. So next, the nanoemulsion are formed by reducing the droplet size to improve the stability and enhance the bioavailability of pharmaceutical compounds. So higher energy methods like ultrasound and lower energy method using surfactants are common techniques of nanoemulsion. अब जो नैनो इमल्शन है उसका जो है सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा. तो सरफेस एरिया ज्यादा, अब किसी भी फॉर्मुलेशन का अगर पार्टिकल साइज कम रहता है तो सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली उसका ज्यादा हो जाता है. जिसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी एनहेंस्ड फॉर्म में रहेगी. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी एनहेंस होगी. अब बात करते हैं एडिटिव्स की. इसमें एडिटिव्स और कौन से हम ऐड कर सकते हैं? एक तो मेन कंपोनेंट्स हमारे ऑयल फेज है, वाटर फेज है और सरफेक्टेंट्स है. उसकी एडिशन में हम ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल ऐड कर सकते हैं, और विस्कोसिटी मॉडिफायर्स जो विस्कोसिटी को जो है मेंटेन करेगा हमारी फॉर्मुलेशन. विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो. So we will discuss about the structure of nanoemulsion. So it is having inner coat, that is oil, drug molecules within the core, and emulsifier layer surrounding the oil. Next, the nanoemulsion characterization.
the analysis techniques. So there are different techniques for characterization, evaluation, that is droplet size analysis कि droplet का size कितना है, viscosity determination कि viscosity कितनी है, test of dilution, efficiency of entrapment कितने वो drug को entrap कर सकता है, thermodynamic stability उसका जो हमारा system है वो thermodynamically stable है या नहीं है, in vitro diffusion उसका diffusion rate क्या है, dye test is used to identify whether the uh, emulsion is oil in water or water in oil, refractive index, pH, zeta potential को हम मेजर करते हैं जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, और जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना हमारा जो है पार्टिकल जो है स्टेबल है आपस में, scanning electron microscopic analysis, percentage transmittance, spreadability, filter paper test, rheological characterization, that is flow properties, stability studies, और in vitro drug release. In vitro हमारे पास दो टर्म्स रहती है, in vitro और in vivo. In vivo हम inside the body किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर जो हम एग्जामिनेशन करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं, वो इन विवो के अंदर आता है. जो आउटसाइड दी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम लैब्स में इंस्ट्रूमेंट्स में जो चेक करते हैं वो इंक्लूड रहता है हमारा इन विट्रो में. तो इसमें इन विट्रो ड्रग रिलीज, तो ड्रग का रिलीज हम आउटसाइड दी बॉडी चेक करते हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग दिस. सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ नैनोएमल्शन. तो जैसे हमने नैनोएमल्शन के बारे में पढ़ा कि इसका फायदा क्या है, तो एप्लीकेशन इससे मिलती जुलती रहेंगी कि इसका स्मॉलर साइज रहता है, स्मॉल साइज की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी एनहांस होगी, बायोबिलिटी एनहांस होगी, तो इसका बेनिफिट जो है ज्यादा बढ़ जाते हैं, साइड इफेक्ट्स इसके कम रहेंगे. सो फॉर द ड्रग डिलीवरी, साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी रहेगी इसकी. जैसे हमारा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं, टारगेटिंग स्पेसिफिक बायोलॉजिकल साइट्स टू इंप्रूव द थेरेप्यूटिक आउटकम्स. कंट्रोल्ड वे में हम इसका यूज कर सकते हैं कि हमने जो है कंट्रोल्ड रिलीज करना है. जो हमारा फंक्शनल फूड्स हैं तो उसमें भी स्टेबिलिटी इसकी एनहांस होगी. जैसे वोलेटाइल ऑयल्स है, तो मान लीजिए फ्लेवर्स है, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, वो वोलेटाइल इन नेचर रहते हैं, तो उसको हम जो है नैनो इमल्शन की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं ताकि उससे जो है वो इवेपोरेट ना हो. तो उसमें जो फूड, मान लीजिए फूड है, उसमें हमने जो उसके जो कंटेंट्स है वो इवेपोरेट ना हो, तो उसमें जो फूड कंटेंट्स है वो भी हमारे ज्यादा फ्रेश रहेंगे ऑन दी स्टोरेज. So cosmetic industries may nanoemulsion for encapsulating the active ingredients. It will improve the skin penetration due to small particle size, provide long-lasting effects in skincare products. So these are some application. Next is our bioavailability. ये हमने डिस्कस कर ही लिया है. सो फार्मास्यूटिकल एडवांसमेंट्स में हमारे जो मेडिसिन है, जैसे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, ये भी हमने कर लिया है. रिड्यूसिंग साइड इफेक्ट्स, improve the therapeutic outcomes in cancer treatment and other diseases. So we have discussed it earlier that drug solubility, stability, absorption, and amplify the efficacy of various pharmaceutical compounds. तो इसमें डोजिंग में प्रिसीजन रहेगा, जो कम डोज में हम दवाई दे सकते हैं. सस्टेन रिलीज, रिलीज को जो ड्रग का रिलीज है उसको हम कम और ज्यादा कर सकते हैं और उसकी बायोबिलिटी एनहांस हो जाए. सो नेक्स्ट जो कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक में हमारा जैसे स्किन पेनिट्रेशन उसकी इम्प्रूव फॉर्म में रहेगी, जो शेल्फ लाइफ है उसकी प्रोलॉन्ग फॉर्म में रहेगी. वी कैन प्रोलॉन्ग द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, enhance the delivery of active ingredients and transforming the skincare formulation. And these emulsion provides better stability, texture, appearance in cosmetic products, leading to the enhanced user experience and product performance. And by incorporating nanoemulsion, cosmetics can achieve targeted delivery of nutrients, vitamins, antioxidants, then it will promote the healthier skin and effective anti-aging solution. तो जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा रहेगी और टेक्सचर उसका स्मूथ रहेगा, तो इसमें हेल्पफुल रहेगा जो हमारे विटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको हम
एज जैसे हमारा एंटी एजिंग सॉल्यूशंस रहते हैं, फॉर्मुलेशन रहती है, तो उसमें ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. So customizable nano emulsion properties in cosmetics allow for control release mechanism, ensuring the gradual benefits and prolonged effects of skincare routines. तो जिस हिसाब से हमें ड्रग की जो रिलीज चाहिए वो हम इसमें जो है कर सकते हैं. मान लो हमें स्लो रिलीज चाहिए, ग्रेजुअली हमने जो ड्रग है स्लोली रिलीज होती रहेगी और अपना एक्शन जो है प्रोलॉन्ग करेंगे, ज्यादा टाइम के लिए हम जो है उसको यूज कर सकते हैं एक टाइम में. फूड इंडस्ट्री डेवलपमेंट, जैसे न्यूट्रिशन है, तो इम्प्रूविंग दी फूड टेक्सचर, टेस्ट, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, optimizing the formulation of functional foods and beverages for the better health benefits, and by encapsulating the bioactive compounds in animation, food products can maintain the freshness. ये पहले हमने डिस्कस कर लिया कि जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स है, अगर उसको हम एनकैप्सुलेट कर लेंगे तो हम जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें फ्रेशनेस मेंटेन हम कर सकते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी हम मेंटेन कर सकते हैं, एनहांस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ दैट एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो बॉडी में रिक्वायर्ड है. सो these emulsions enable the development of fortified foods with enhanced sensory attributes. अब जी fortified foods है, इसका जैसे एग्जांपल आपका, अब जैसे साल्ट है उसमें हमने आयोडीन ऐड करते हैं, तो कोई भी चीज इन एडिशन हम ऐड कर रहे हैं दैट इज फोर्टिफाइड फूड्स. मान लो किसी में हमने जिंक ऐड किया है, किसी में हमने आयोडीन ऐड किया है, दैट इज इंक्लूडेड इन दी fortified foods. So these emulsion enable the development of that fortified foods with enhanced sensory attributes and extended shelf life. उसकी shelf life भी हम जो है उससे इंक्रीज होगी, जब फ्रेशनेस उसमें इंक्रीज होगी तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है उसमें इंक्रीज आएगा. एंड कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ फ्लेवर्स एंड सप्लीमेंट, जैसे वोलेटाइल ऑयल है उसको हमने एनकैप्सुलेट कर लिया है, तो वो जो फ्लेवर्स है उसका भी कंट्रोल्ड वे में रिलीज रहेगा. सो इट विल also helpful in the food preservation methods, ensuring the food safety, quality and nutrition value will be high for the extended periods. Next, in the agricultural advantage, in agriculture, nanoemulsion enhance the pesticide efficacy by improving the adhesion, penetration, and target specificity, reducing the environmental impact and enhancing the crop protection. तो जो पेस्टिसाइड है तो उसकी एफिकेसी भी जो है नैनोएमुलेशन की फॉर्म में हम जो है एनहेंस कर सकते हैं. अब जो उसका पार्टिकल साइज कम रहेगा तो वो अडेयर, उसकी अडेशन जो पावर है वो इंक्रीज होगी, पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज होगी और टारगेट स्पेसिफिसिटी भी उसकी इंक्रीज होगी. सो इट विल रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और जो क्रॉप की प्रोटेक्शन है उसको वो एनहेंस करेगा. सो बाय एनकैप्सुलेटिंग द एग्रोकेमिकल्स इन नैनोएमुलेशन, farmers achieve the controlled release, increased stability, and minimize the chemical runoff, and promoting the sustainable farming practices. And nanoemulsion offer precise control over pesticide application, reduce overuse, minimizing the resistance development in pests, and optimizing crop yield and quality. And the efficient utilization of nanoemulsion in agriculture supports eco-friendly pest management strategies, ensuring crop health, productivity, and environmental sustainability. So these are applications of nanoemulsion, and so not only in the field of pharmacy, but it is also beneficial for the other industries. So thank you so much for your valuable time.